Hello, good evening, students. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप और मिकेलेज मेथड से हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पॉइंट पर पॉइंट लोड का के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप डिटरमाइन किया था। आज एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम की स्पेसिफिक। लेट अस कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L. Let us consider a cantilever beam AB having a point load of 10 kN at its free end along with a uniformly distributed load over a length of 2 meters of intensity 20 kN per meter. The total length of the beam is 5 meters. Modulus of elasticity of the material is 200 into 10 to the power 6 kN per meter square, and moment of inertia of the cross section is 100 into 10 to the power minus 6 mm to the power 4. Okay. इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप. एज वी नो दैट maximum deflection will occur at the free end of a cantilever beam, and slope is also maximum at its free end. At its fixed end, in a cantilever beam at its fixed end, slope and deflection both are zero at the fixed ends. Okay. Now, if deflection of the beam at a section XX at a distance x from the point A. The deflection of beam at a distance xx at a section xx at a distance x from the point A is y. In that case, bending a moment of resistance about that section will be equal to the EI d2y over dx square. Equation number 1. E into I is the fluxural rigidity is EI. Here E is 200 into 10 to the power
6 किलो न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर, and I is equal to 100 into 10 to the power minus 6 mm to the power 4. Let's suppose this will be meter to the power 4. Okay, so E into I will be equal to the 2 into 10 to the power 4 kilo Newton meter square. Okay, now total deflection at its free end will be equal to the deflection due to the point load only. Suppose deflection due to the point load will be y1, and slope due to the point load is theta 1. Okay, and deflection due to the uniformly distributed load is y2, and slope due to the uniformly distributed load is theta 2. In that case, total deflection and slope, total deflection at free end y will be equal to the deflection due to the point load only plus deflection due to the uniformly distributed load, and total slope at free end theta will be equal to the theta 1 plus theta 2. Okay, फर्स्ट केस पॉइंट लोड फ्री एंड पर आपके अगर लग रहा है तो इस केस में हमें पता है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू होती है वो हम जानते हैं, उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो उसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो हमें दिया गया है, ओके, उसके लिए हमें इसको अलग तरह से सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कोई इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखिए, फॉर ओनली डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ड्यू टू पॉइंट लोड, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ड्यू टू point load only, we know that deflection, maximum deflection will be equal to the W L Q upon 3EI, okay, and slope will be equal to the WL square upon 2EI. Now deflection Y1 will be equal to the point load is 10 kilonewton multiplied by length of the beam is 5 meters divided by 3 into 2 into 10 to the power 4. Flexural rigidity. Calculating this, it will be equal to the 208 into 10 to the power minus 4 meters or 20.8 mm. Clear? And the slope theta 1 will be equal to the WL square upon 2EI. W is 10, L is 5, 2 into 2 into 10 to the power 4. 62.5 into 10 to the power minus 4. Okay. Now come to the second case. सेकेंड केस, यूडीएल जो हमारा है वो ए से सी डिस्टेंस तक 2 मीटर की डिस्टेंस तक है। यहाँ आगे कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना लगे होने की वजह से मिकैलिस मेथड हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस केस में अगर हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से निकालना है, फाइंड आउट करना है डायरेक्टली, तो इसके बैक साइड में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करेंगे। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन से और कंटिन्यूअस कर देंगे, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करेंगे। इंटेंसिटी होगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर की ही। ये 2 मीटर तक अप्लाई हो रहा है और उसके बाद 3 मीटर्स। अब इसे फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हमने डेरिवेशन किया था कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कैंटिलीवर बीम के पूरी लेंथ पर अप्लाई हो रहा हो, इस केस में फ्री एंड पर टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। प्लस दूसरा केस है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फिक्स्ड एंड से नीचे से 3 मीटर की डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा है।
तो सब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो डिफ्लेक्शन है पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करने से वो y3 है और स्लोप है θ3। इसी तरह यहाँ पर जो देखिए ये स्लोप तो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स अपवर्ड से अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, स्लोप ये होगा। लेकिन दूसरे केस में फोर्स डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिफ्लेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। सपोज ये y4 है और यहाँ पर स्लोप θ4 होगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि जो एंगल आएगा वो हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस से आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टोटल अगर बेंडिंग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से, तो ये होगा अलजेब्रिक सम ऑफ y3 प्लस y4 दोनों केसेस का। सिमिलरली अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टोटल, और तो ये बराबर होगा θ3 प्लस θ4। क्लियर? ओके, फर्स्ट केस की बात करते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब पूरी लेंथ पर अप्लाई होता है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जी, तो डिफ्लेक्शन at free end, deflection due to uniformly distributed load at its free end. So y3 will be equal to, फार्मूला होता है हमारे पास W L to the power 4 upon 8 EI, एंड स्लोप के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, सो हियर θ3 will be equal to the WL cube upon 6 EI। क्लियर? यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसे माइनस साइन से लेंगे। और यहाँ पर जो हमने डिफ्लेक्शन निकाला था ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये नेगेटिव साइन। एंगल्स आपके पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसे अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम y3 और θ3 को। डिफ्लेक्शन and slope due to UDL, y3 will be is equal to W minus WL to the power 4 upon 8 EI. It will be equal to the minus W is equal to 20, L is 5, yes 5 upon 8 into flexural rigidity, which is equal to into 10 to the power 4.
Okay, now calculating this, y3 will be equal to the 781 into 10 to the power minus 4 meters, और y3 will be equal to the 78.1 mm. Clear? And now slope theta 3 will be is equal to the W L cube upon 6CI. W is 20 kilonewton, L is 5 meters to the power 3 divided by 6 into 2 into 10 to the power 4. Theta 3 will be equal to the 208 into 10 to the power minus 4. Okay. Now जो ये सेकंड केस है हमारे पास, अब इस फर्दर इसमें यहाँ पर अगर मुझे ये y4 और θ4 की वैल्यू निकालनी है तो इसे फिर से मुझे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखिए, फिर से देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या था हमारे पास। प्रॉब्लम था एक कैंटिलीवर बीम था जिसके फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन्स का हमारे पास पॉइंट लोड है और 20 किलो न्यूटन का हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ओके, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये 3 मीटर है। हमें मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसे दो पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट, केवल पॉइंट लोड अप्लाई करने से कितना डिफ्लेक्शन और स्लोप आया। अगर y1 डिफ्लेक्शन आया और स्लोप अगर यहाँ पर θ1 है, इस केस में केवल पॉइंट लोड अप्लाई करने से, तो उसे हम डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया, प्लस केवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करने से जो भी डिफ्लेक्शन और स्लोप आया उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कुछ इस तरह से। टोटल डिफ्लेक्शन इसकी वजह से y2 और स्लोप इट विल बी इक्वल टू θ2 ए बी। क्लियर? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम यहाँ देखें, ये जो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, इसमें हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को इस सिंपल तरीके से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जी यहाँ इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे?
इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला केस, यहाँ हम एक डमी लोड लगाएंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड सिमिलर इंटेंसिटी का, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो ये तो लोड एक बॉटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो नेट फोर्स जो होगा वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का ही है। लेकिन इस केस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फिर फर्दर। एक जिसमें पूरी लेंथ पर हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, और इसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और जो एंगल होगा, जो स्लोप होगा वो θ3 वो पॉजिटिव होगा। तो जो y3 का फार्मूला होता है, मतलब टोटल लेंथ पर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो WL⁴/8EI, और जो स्लोप होता है इस केस में वो होता है WL⁴/6EI। इज इट क्लियर? अब जो दूसरा केस है, यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने पॉइंट लेंथ तक फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां तक का डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फर्दर आगे की तरफ जो आपका बीम है वो स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके आगे कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज द पॉइंट सी। हम YC पॉइंट तक, दिस इज द पॉइंट A डैश, लेट्स सपोज D, दिस इज द पॉइंट E, ओके। यहाँ इस केस में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में है, C पॉइंट पर अगर डिफ्लेक्शन YC है और जो स्लोप है वो अगर हम डिटरमाइन करें तो ये हमारा स्लोप आएगा माइनस एक्स एक्सिस से, इसको मान लेते हैं θC। टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा y4। y4 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो YC की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और θC की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पर YC इज इक्वल टू होगा WL⁵ to the power 4 अपॉन 8EI। इज इट क्लियर? B से C तक की लेंथ और मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं θC, ये माइनस आएगा हमारा, माइनस WLBC to the power 3 अपॉन 6EI, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। YC विल बी इक्वल टू दी WLBC to the power 4 upon 8EI. It will be equal to the 20 into 3 to the power 4 upon 8, 2 into 10 to the power 4. So YC will be equal to the 101 into 10 to the power minus 4 meters, और say 101 mm। ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फार्मूले से जो स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप होगा माइनस WLBC to the power 3 divided by 6EI. Here minus sign shows that angle has been taken from the minus x-axis in clockwise direction. Okay. Minus 20 into 3 to the power 3 divided by 6 into 2 into 10 to the power 4.
कैलकुलेट करते हैं इसे, थीटा सी विल बी इक्वल टू द -45 into 10 to the power -4 in minus sign. Okay. Now theta c will be equal to the theta 3. Now from the right angle triangle, from right angle triangle A dash DE, हमें यहाँ A dash D फाइंड आउट करना है. A dash D will be equal to the sin theta c into A dash E. Clear? Here A dash D will be equal to the A dash E is 2 meters, sin 45 into 10 to the power -4. So A dash D will be equal to the it will be equal to the 90 into 10 to the power -4 meters, or say A dash D will be equal to 90 mm. 90 mm. Now y2 will be equal to the yc plus y A dash D, not y A dash D. So y2 will be equal to yc is 101 mm, A dash D is 90 mm. So y2 will be equal to the 191 mm, and theta 3 y1 y2 y3 था ना, y3 थे. Theta 3 will be is equal to the theta c, which is equal to the 45 -45 into 10 to the -4. टोटल डिफ्लेक्शन और स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करना हो टोटल, तो ये किसके बराबर होगा. यहाँ पर देखिए क्या केसेस बने हमारे पास. यहाँ से हमने y2 और थीटा 2 डिटरमाइन किया. y2 will be is equal to the y3 plus yc, नॉट yc, इसको y4 बोल रहे हैं, y3 plus y4. Okay, and theta 2 will be is equal to the theta 3 plus theta 4. Okay, and so y4, this is the y4. Okay, now the y2 will be equal to the y3 plus y4. y3 जो पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसकी वजह से जो
78.1 और 208 75.1 mm। Y3 आया 75.1 mm और Y4 है हमारे पास 191 mm। Y3 78.1 mm, yes। It will be equal to 10.1 mm. Okay, this is 10.1 mm. And this is 9 mm. 10.1 and 9 mm is equal to the 19.1 mm. Okay. Now, 19.1 mm. तो ये वैल्यू होगा हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन। इट विल बी इक्वल टू दी 75 56 minus 56 mm in downward, 56 mm in downward direction. Okay, and total angle will be equal to the theta 2 will be equal to the theta 3 plus theta 4, theta 3 theta 3 is theta 3 is 208 into 10 to the power minus 4. Theta 3 is 208 into 10 to the power minus 4 and plus minus 45 into 10 to the power minus 4. So total slope will be equal to the total deflection y will is equal to y1 plus y2. y1 is 20.8 mm and y2 minus 6.8
What is theta 1? Value of theta 1. What is the value of theta 1? Theta 1 is 62.5. 62.5 theta is 62.5 into 10 to the power plus 200 into 10 to the power. So maybe hundred 5.5 into 10 to the power equal to 5 इसमें सारे केसेस डिफिकल्टीज मैंने इसमें ऐड हो गई हैं। प्रॉब्लम थी हमारे पास कि एक पॉइंट लोड एक कैंटिलीवर बीम है हमारे पास और इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का लोड है, 10 किलो न्यूटन, और टोटल लेंथ और हमें ये पता है कि अगर कैंटिलीवर की पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो डिफ्लेक्शन और स्लोप का फार्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले पॉइंट लोड को हमने सब डिवाइड किया है कि पॉइंट लोड की वजह से स्लोप और डिफ्लेक्शन को हम पहले फाइंड आउट कर लें डायरेक्ट फार्मूले से। ओके, और जो फार्मूला होता है इसका, वो फार्मूला होता है डिफ्लेक्शन के लिए y इज इक्वल टू दी WL³ अपॉन 3EI डिफ्लेक्शन होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और स्लोप होगा θ1 प्लस θ2। यहाँ दोनों ही फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों में ही माइनस साइन शो करेगा, जो कि ये बताएगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव आएगा इस केस में, क्योंकि अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों ही केसेस में तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल हम डिटरमाइन करेंगे। को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, आपके पास एक पॉइंट लोड है, तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया और अपवर्ड में भी 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो टोटल इफेक्ट जो आएगा बीम पे, तो वो तो केवल सिर्फ एक सिंगल पॉइंट लोड से रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस केस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब बीम के WL2/6, सॉरी नॉट 3 है, 8 EI, और स्लोप का जो फार्मूला है वो हमारे पास WL2/6 EI है। यहाँ जो स्लोप आएगा ये नेगेटिव आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और सॉरी डिफ्लेक्शन जो आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज है। लेकिन जब फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से बनेगा, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।